Only on Republic TV. Now Muslim groups have written to the center on PFI. Muslim groups are writing to Amit Shah on PFI role in rights, and they're demanding action. And for more on this exclusive story, I want to go across to Niranjan, who has all the details. Niranjan. Yes, getting in some breaking news now from the newsroom right now. There's a letter that has been written, Shivangi, and I have the letter in my hand, and it's a very significant letter, a story that Republic TV is breaking right now from the newsroom behind me. This letter accessed by Sagai Raj, who's joining us live from Bengaluru, and this Muslim group has written to the Home Minister of India, Amit Shah. I have the letter in my hand, a letter written by a Muslim group called the Sufi Khanka Association. The Sufi Khanka Association has written to Home Minister Amit Shah asking for action against the radical group PFI. That's a breaking news update that I have from the newsroom right now. A Muslim group called Sufi Khanka Association has written to Home Minister Amit Shah while claiming the PFI hand in riots across India, claiming the PFI had a role in the riots in Khambat, in most of the Ram Navami related violence across India. This Muslim group has written to the Home Minister, and I think this is a huge development, The letter is on the surface, you will see it on the screen beside me, and this group called the Sufi Khanka Association has just written to the Home Minister, asking for the Home Minister to act against PFI, to act on the radical statements that have been made. It's a Republic TV exclusive. They want action to be taken against the PFI, claiming that the PFI had a role in the violence in the Shobha Yatras of Ram Navami in North and West India. So we'll also show you the pictures of the riots, pictures of what's been going on across India. And I think we have Sufi Mohammad Kausar Hassan Majidi. Sufi Mohammad साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Can you hear me, sir? जी आ रही है. नमस्कार. So आपने ये चिट्ठी लिखी, yeah, sir, you have written this letter, Mr. Sufi Mohammad Kausar, and why do you? Because on Republic TV, we have been reporting about the PFI का जो rally होते हैं, उनका जो speeches होते हैं, उनका जो hidden hand है, उस पे बहुत सारा reporting भी की है हमने. Why do you think PFI is involved in the riots? सूफी मोहम्मद जी. जी सुन पा रहा हूँ मैं. बताइए. PFI एक चरमपंथी संगठन है जो तुर्की बेस्ड मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर काम करता है और भारत में वो खिलाफत का निजाम कायम करना चाहते हैं, यानी एक ऐसा निरंकुश शासन तंत्र कायम करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स में ही एक खास वहाबी विचारधारा की रूलिंग हो, बाकी को वो डिनाई करते हैं. तो ऐसे संगठन का सूफी समाज और ऐसी विचारधारा का सूफी समाज कभी भी समर्थन नहीं करता है. अभी हालिया के दिनों में 26 जनवरी के बाद जब उन्होंने PFI ने ये तय किया कि हम लोकतंत्र बचाओ के नाम पर पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे, उस कैंपेन चलाने के बाद लगातार पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं बढ़ी है जिससे सांप्रदायिकता बढ़ी है. उसके बाद सबसे खास बात है कि 17 फरवरी को इन्होंने कोटा में सम्मेलन किया और 28 फरवरी को अहमदाबाद में एक वेबिनार किया. उसके बाद से जो हिंदू त्योहार हुए जैसे रामनवमी है, उस त्योहार में जो घटनाएं हुई सांप्रदायिकता की उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उससे पूरे देश का माहौल खराब हुआ. हमारी आशंका ये है कि स्टार पार्टी के नाम पर PFI के लोगों ने, खासतौर से मोहम्मद शकीब जो इनका राष्ट्रीय सचिव है, इन्होंने मैसूर में और पूरे कर्नाटक में उत्तेजक भाषण दिए हैं, जैसा कि उन्होंने हिजाब के मुद्दे पर भी लोगों में भ्रम फैलाया था, CA/NRC में भी भ्रम फैलाया था. तो हमारी आशंका है, सूफी खानका एसोसिएशन को ये आशंका है कि ये लोग जिस तरह से उत्तर भारत और पश्चिम भारत में रामनवमी में घटनाएं हुई है, उस तरह की ये घटनाएं दक्षिण भारत में ईद के मौके पर कर सकते हैं. इसलिए शासन और प्रशासन को सचेत करने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा एक लेटर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यूनियन ऑफ इंडिया को और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर्स और वहाँ के DGPs को हमने दिया है ताकि प्रशासन सचेत रहे और कोई ऐसी अनहोनी ना हो जैसी रामनवमी में हुई.
आपको लगता है कि अभी टाइम आ गया है PFI को बैन करने का? बिकॉज वी हैव ब्रोकन। हाँ बोलिए। हमारी तो बहुत पुरानी मांग है और ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, और जितनी जल्दी होगा हम अपने देश की तबाही और बर्बादी को रोक सकते हैं। जितनी जल्दी PFI को बैन कर देंगे, जितनी जल्दी PFI को बैन कर देंगे, हमारे नौजवानों की फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं, अभी जो आई टेल यू मिस्टर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, ये जो PFI का पूरा स्ट्रैटेजी जो है, अभी हमने देखा है कि उनका डायरेक्ट हाथ नहीं, लेकिन उनका जो एसोसिएटेड बॉडीज हो, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया या SDPI, उनका जो पॉलिटिकल आउटफिट है, अभी उडुपी में जो हिजाब कंट्रोवर्सी था, उनका हाथ था उसमें। कहाँ पे भी दंगे होता है, wherever there are riots, wherever there is some communal violence, somehow there is a direct or indirect link emerging. So do you think there should be action? Why do you think such groups get political backing? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे एक राजनीतिक संरक्षण है, और बगैर राजनीतिक संरक्षण के ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और PFI तो एक मतलब संगठन है, उसके सारे कैडर हैं, जैसे कि SDPI है, इनका पॉलिटिकल कैडर है, और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो इनका स्टूडेंट कैडर है, और इन्होंने एक उलेमा विंग बना रखी है जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन करके ऐसी कुछ है, जो इनकी विचारधारा के मौलाना लोगों की टीम है। और साथ में ही ये सूफीज्म में भी अपनी घुसपैठ बना रहे हैं। एक बड़े चर्चित सूफी महोदय हैं अजमेर शरीफ के, उनके जरिए भी इन्होंने पैठ बना रखी है। तो मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये कहते जरूर है कि ये इत्तेहाद उम्मा की बात करते हैं, और इत्तेहाद उम्मा के नाम पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी है, लेकिन इसके पीछे इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो भारत को पुनः विभाजित करने का एजेंडा है, और कुछ भी नहीं। Sufi Mohammad Kausar Hassan Majidi ji, thank you for speaking to Republic TV. That is Sufi Mohammad Kausar Hassan Majidi. I have his letter with me, by the way. He's written a letter to the center addressed directly to the Home Minister of India, Amit Shah. And in this letter, the Muslim group has claimed a role of the radical PFI, which, by the way, is on the verge of being banned. They were supposed to be banned a few weeks back. Sagai Raj, who broke the story, also joining us live. Sagai Raj has been reporting also on the role of PFI-linked bodies. Now, Sagai, in your investigation into hijab issue and the other issues and the violence that we've seen, what kind of role has the PFI or its affiliates played? They were the people who were leading the protest in front. When we also exposed the role of PFI and Campus Front of India, which is an affiliation with the PFI, they have openly confessed to Republic, stating that yes, we are the people who are leading this particular protest from front, and these are the people who have instigated and intimidated these students to protest against their own school. Remember, this particular issue was raised only in the month of December, and these students are studying in the same school and college for a longer time, and they have been practicing the rules and regulation which was been imposed by the schools and colleges for a long time. In this letter, the Sufi Association has also mentioned about the hijab issue, how the entire protest was aggravated, and how PFI and its student wing CFI has intimidated and instigated people to come out on the street and protest against this, and this particular hijab protest has led to many other protests in retaliation from Hindu organizations as well in the state of Karnataka. And after a while, there was also some kind of communal tension which was being reported in Karnataka after these kind of protests. Now, Sufi Association have criticized, stating that Popular Front of India is the kingpin. It is the main organization which has provoked the people, which has led for these kind of situation. And yet also blamed the communal tension which prevailed during the time of Ram Navami and Hanuman Jayanti in Karnataka and several places across India. And it has stated that it is the PFI which has instigated, and they had also warned in the month of January 2022 while addressing a conference in Mysuru about this entire issue.
Okay, stay with me once again. I'd like to show the viewers, all our viewers, this letter that I have in my hand. This letter that I have in my hand has been written by this Muslim body, Republic TV exclusive, broken by Sagai Raj a few minutes back. This letter was accessed by him. It is significant because the PFI likes to play the religion card. The PFI claims that it speaks for the community, which of course it does not. It's a radical group, and in this letter, another Muslim body has written to the center saying that the PFI is radical, the PFI is not good for our society, saying the PFI makes incendiary speeches and that they should be banned, action should be taken, claiming that the PFI possibly had a hand in the riots in North and West India. In the words of the Sufi Kanka Association, this group has said the involvement of the PFI in the violence during the Shobha Yatras of Ram Navami in North and West India is a matter of concern. I think we're getting in some more responses now, but let me read out what else has been written by this Muslim group in its letter to the Home Minister. Ram Navami like violence in North India may be repeated. I repeat, they say Ram Navami like violence in North India may be repeated by PFI in South India at the time of Eid, due to which PFI has started its activities in South India by PFI leader Muhammad Shakif in Mysore, Karnataka on the 29th of April. They are warning, saying that there could be riots in Karnataka, saying the provocative statement made at an iftar party confirms this fact. And while admitting to the involvement of PFI in the incidents of protest against the citizenship law in the speech given by Muhammad Shakif at the iftar party of religious importance, claiming the PFI wants a riot, they're even admitting, they're even saying there could be riots on Eid. They're saying there could be riots on Eid, and that provocative statements are being made just before Eid, saying that in such a situation, it is necessary that on the basis of the above statements, strict action be taken against Muhammad Shakif, and arrangements should be made by PFI. I think we have a PFI secretary joining us on the phone line. Let me see if I can go across. Okay, Mr. Patan, can you hear me? Taj Mohammad Patan. यस सुन रहा हूँ, बोलिए। ये सूफी कनका एसोसिएशन जो है, सूफी कनका एसोसिएशन, इन्होंने होम मिनिस्टर को लिखा है कि आरोप नहीं, आपके ऊपर बैन का मांग कर रहे हैं, और आपका जो मोहम्मद शकीफ है उनका जो स्पीच है वो बोल रहे हैं कि आप एक रेडिकल ग्रुप है और सब जगह आपको दंगा चाहिए और आपको बैन करना चाहिए, और तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? सर, पॉपुलर फ्रंट अपने काम से जवाब देता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कोरोना में पॉपुलर फ्रंट ने कितना बड़ा इतिहास लिखा है, और जब भी देश पे विपदा आई है, पॉपुलर फ्रंट ने हमेशा देश के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और ये तो किराए के लोग हैं, भाड़े के टट्टू है, ऐसे लोग जो इनको जो बीजेपी और आरएसएस बुलवाती वही बोलते हैं। इनके न तो ये सूफियों से इनका कोई लेना देना है, सूफी के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों की मुस्लिम समाज में कोई वैल्यू नहीं है। आज पॉपुलर फ्रंट के साथ पूरे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मुस्लिम आवाम का और गैर मुस्लिमों का सबका सपोर्ट है पॉपुलर फ्रंट के साथ में। लखिया सूफी फोरम के साथ 5 आदमी खड़े नहीं होते हैं कि चौराहे। तो ये दुकानें हैं, हम ऐसे लोगों की हमारे नज़र में और मुस्लिम समाज की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। पॉपुलर फ्रंट का जवाब देश की आवाम दे रही, पूरा देश पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़ा है। क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक ग्रुप है जो सभी मुसलमानों का वॉइस है? तो आप गलत बोल रहे हैं। आप क्या आपको ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। एक और ग्रुप अगर लिख रही है तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू से दैट यू आर द सोल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, व्हिच यू आर नॉट ऑफ कोर्स। सर देखिए, ये जब भी मुसलमानों के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस पॉलिसी लेकर आती है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच